Assalamu alaikum, my dear friends. I welcome all of you for the English class of 10th. In the previous video, we were discussing about the summary of ABHILEY, an old woman from the Ladakh. Today, we are going to discuss the textual questions of the ABHILEY story. Let's start with the first question. The question is: do you think that ABHILEY represents the simplicity of Ladakh woman? Cite two examples of her innocence and ignorance from the text. People living on the hills are usually very simple at heart. It is all the more true about people who live in the villages and know nothing about the modern technology and the outside world. Abele is also such a woman. She is an old Ladakhi woman and has never gone from far from her village. To her, Srinagar is as distant a place as Turkey. An earthquake in Turkey brings tears in her eyes because her granddaughter Ruxana is living in Srinagar. Dolma tells Abile that she lives in Delhi. At this, Abile at once concludes that she must be meeting Ruxana daily. She knows nothing of the distance between the Delhi and Srinagar. If she hears of a bus breaking down on a road, she feels certain that none of the passengers can be alive. Abile is truly a very innocent and ignorant woman. If she hears of a mishap anywhere, she at once becomes worried about her Ruxana. She starts praying to God for her safety. The narrator himself admits that dear Abile was a very simple woman. He says, I must confess that I may take advantage of Abile's simplicity. He derives pleasures from her worries born out of trivial things. तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो एबिली थी एक लद्दाखी वुमन, ओल्ड लद्दाखी ग्रैनी वुमन थी, बहुत बूढ़ी औरत थी, लेकिन इसको अपनी लद्दाख के अलावा कुछ नहीं मालूम था कि ये जो लद्दाख है इसके आगे भी कोई दुनिया है। तो उसकी जो एक छोटी सी ग्रैंड डॉटर थी उसकी, वो रुखसाना, वो श्रीनगर में पढ़ती थी, उसकी जो पोती थी, तो उसकी वजह से वो परेशान होती थी कि वो कैसे वहाँ पे रहती होगी। जब भी वो कोई खबर सुनती थी या किसी को कोई मेहमान आता था किसी जगह से, तो उससे पूछती थी कि रुखसाना कैसी है। एक दफ़ा उनकी एक रिलेटिव आई थी जिसका नाम डोलमा था, तो वो दिल्ली में रहती थी, उससे भी पूछा कि आप उससे मिलती हो। तो उसको ये लगता था कि जो श्रीनगर है बहुत दूर है, जैसे कि तुर्की दूर है, इतना ही दूर होगा। अगर किसी जगह पे, अगर तुर्की में कोई ज़लज़ला आता या किसी जगह पे कोई बस हादसा होता, तो उसको ये लगता था कि शायद रुखसाना ठीक हो। इससे हमें यह पता चलता था कि वो बहुत सिंपल औरत थी, जो सिर्फ अपने गांव में ही पैदा हुई, बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए। इसके अलावा इसने कोई दुनिया ही नहीं देखी थी, इतनी सिंपल थी वो। एक और क्वेश्चन है हमारा कि why did not Emily recognize the Dolma and why did she call her a Memsab? Dolma was a young girl. Emily had not seen her for years. She was the daughter of a distant relative. She lives in Delhi. Once she came to the village and met Emily and others in her family. Emily could not recognize Dolma. She kept staring at her. At last, she was told that it was Dolma. Emily was astonished. She was astonished that she had not recognized Dolma, but she was more astonished because now Dolma looked so different. She did not look like a village girl now. She looked very modern. She had dressed herself in a Western manner.
That was why ABHILEY called her a mem sub. Mem sub means a Western woman. Here, by mem sub, ABHILEY simply means a girl who has dressed herself in a modern lifestyle. So she was very simple. She did not recognize her relative. तो इससे हमें यह पता चलता कि ये जो एबिली थी ये कितनी शरीफ औरत थी जो अपने रिलेटिव्स को भी नहीं पहचानती थी। जब इसको डोलमा मिलने के लिए आई तो ये इसको मैम साहब कह के पुकारने लगी। तो इसे ये भी नहीं पता चला ये कौन है, इतनी सिंपल औरत थी वो। एक और क्वेश्चन है, हाउ विल यू एस्टिमेट एबिलीज रेस्पॉन्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी? It is good to hold on to the one's traditions, but the tradition must be a healthy one. Unhealthy traditions do more harm than the good. Traditions based on good moral values ought to be respected. They must be maintained, but some traditions smack of backwardness. They smack of the ignorance and superstitions. They must be given up. There is no doubt that the Abili is a loving older woman. She is a nice mother-in-law. She is an adorable granny. But her too much ignorance makes her a laughable character. Even the members of her own family giggle at her ignorance. Dolma lives in Delhi. Ruxana lives in Srinagar. And Avine feels that the two must be meeting every day. And when she hears of a bus breaking down on its way, she feels certain that none of the passengers could be alive. What an ignorance is this, is it? The least one can say about it is a funny. तो इग्नोरेंस तो अच्छी है कि ये जो एबिली थी ये एक ट्रेडिशनल वूमेन थी, ट्रेडिशनल गाँव की वूमेन थी। इसकी ये अपने ट्रेडिशन से प्यार करती थी, लेकिन ये बहुत सिंपल थी और इग्नोरेंस थी इसमें ज़्यादा, तो वो सुपरस्टिशन भी ज़्यादा थी। तो इसकी वजह से हमें ये पता चला इंसान इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए। इंसान को अपनी जो इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजारता है या कोई भी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, चाहे अपने गांव में गुजारता है या कहीं और गुजारता हो, उसको ये चाहिए कि वो थोड़ा अपने इलाके में घूमे, अपने स्टेट में घूमे, अपने ज़िले में घूमे, ताकि इसको भी पता चले कि हम कहाँ रहते हैं। हमारे आसपास भी गांव हैं, हमारे आसपास भी सिटियां हैं, तो हमारे आसपास भी कोई इलाके हैं। तो इस तरह से इनको अब वाकफियत होती है अपने माहौल की, अपने स्टेट की या अपने मुल्क की वाकफियत होती है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।